Hi everyone, welcome back. I'm Sakshi, your mentor here. So now basically what we do is we can solve the complete Brahmastra test series part 4 in a detailed version. Okay, so let me help you out with the same. So let's start with the question number 1, which is in our test series, which is like this. A positive electric flux indicates that the electric line of force was directed, and we have 4 options: inward, outwards, or either both or none of these. So simple. What does this flux means? What is flux? Basically, flux means any surface area and in which the number of electric field lines passing through it. Means suppose एक बॉल है, उसमें से कितनी लाइंस पास करिए, that is our electric flux, right? So the basic electric flux which indicates the electric lines of force, they are directly outwards, inwards, or where? So we can say the positive flux means the total current flowing through the flowing outwards is more than the total current flowing inwards. So basically क्या रहता है, जितना फ्लक्स जो है वो आउटवर्ड जा रहा है वो ज़्यादा है देन द करंट इनवर्ड्स, राइट? सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस वी हैव ऑप्शन नंबर 4 बिकॉज द एग्जैक्ट ऑप्शन इज नॉट मेंशन्ड हियर. ओके, सो लेट्स गो टू द सेकंड क्वेश्चन, व्हिच इज द इलेक्ट्रिक फील्ड due to an infinitely long straight uniformly charged wire at the distance r is directly proportional to what? So what it exactly says? It says there is a long straight wire. Suppose this is my long straight wire. Okay, so electric field due to this wire, which is very long and straight, and it is uniformly charged. Uniformly charged means charge are equally spread out between it. Okay, so at the distance r, suppose we have some point here and this is our distance r. So at particular this distance, what should be the r? R is directly proportional to the electric field is directly proportional to what r. So we can easily see the formula for this electric field due to this infinite wire. We can easily know the formula directly. We have a derivation also. So it is E. This is equals to lambda by 2. E is equals to lambda by 2. It's 2 pi epsilon naught r. So you can easily see E and r is in a reciprocal. That means it is a inversely there, right? So that means this E is basically inversely proportional to r. That means E is inversely proportional to 1 by r. This is a confusing one. How? देखो, what if it is mentioned here it is directly proportional to what? You can say you are saying like it is inversely, but no, we need to find as a directly proportional one, right? So r is in the denominator here, so that's why we will be choosing option number C. That is our correct answer. Fine. So now let's move to the third question, which is an electric dipole is placed at an angle of 30 degree, which is an electric field of intensity 2 into 10 to power 5 Newton per coulomb. So it experiences a torque of 4 Newton meter. Calculate the charge of the dipole if the dipole length is 2 centimeter. So we need to find what is the charge on the dipole. What is dipole? So basically first understand this, then only you can easily solve this question. So dipole basically means we have two charges separated by some 2q distance. So that means it becomes a dipole. You can remember it by di means 2. Di is equals to 2, right? So any two charges, one is positive, one is negative, placed somewhere, and in between we have a distance of 2. So that means this is basically this is a dipole scenario, right? And we need to find what is the charge on the dipole if this dipole length is 2 centimeter. So how can we do this? We know the torque. Torque is equals to P into E, that means P cross E, that means it is PE sine theta, right? So let's put the values. Here we have given the torque is 5. So whatever given in the question, first try to do all the things that is given in the question, try to find the formulas based on it, because जो उसमें formulas दिए होंगे, right? जो उसमें values दी है, that means उससे से related formulas निकाल के हम values निकाल लेंगे. कभी भी समझना है कुछ कि हमें कौन सा फॉर्मूला लगाना है, क्या करना है, डायरेक्टली जो गिवन है उसके फॉर्मूले याद रखना है, ठीक है? सो टॉर्क इज इक्वल्स टू दिस, हमने वैल्यूज पुट करा, दैट विल बिकम 4 इज इक्वल्स टू P बिकॉज P इज नॉट गिवन, तो 2 multiplied by 10 to power 5 which is given, and then sine 30 degree because it is mentioned here it is 30 degree, right? So let's find the P from here. We can take left को उधर ले जाओ, right को उधर ले जाओ, सारे की साइड, it's simple mathematics, right? P आप निकालोगे, that will become 4 by this.
if you're solving this, you will get your answer as a 4 into 10 to power minus 5 centimeter. So now we have a P. Now we know what is the dipole moment. It is P is equals to Q into Y. That is a simple basic formula that you have. So Q is equal to P by this, and we just directly substitute the values and we get your answer, which is 2. 2 means, that means option number D is your correct answer. It's very simple as that. So let's move to the fourth question, which is the work done in placing a charge of this. So we have given the charge, that means Q is given, right? So that means Q is given on a condenser of capacity this. So we have given Q charge and capacity is also given. It's very simple and very one-liner question, very easy, in easy category question. So how can you do this? This particular question is from electric potential, right? Because we need to find the potential of this. So work done is place charge is given and condensed capacity is given. So how you can do? We have a formula, that means work done is equals to Q square by 2C. Simply put the values. Q is given, which is 8 into 10 to the power minus 18. We have substituted this value. By 2 is as it is, and C. What is the C given? Capacity is given as 100 nu F. So if we converting into simple, we will multiply it by 10 to the power minus 6. If we multiplied it, we get that W is equals to this answer, and we can easily match with our third option. So in that particular cases, what happens, it's very simple. You just directly need to, what is important is the formulas. So I suggest you, before going your examinations, prepare a complete formula list, okay? Because it will, so that once you go with your examination, just open it and have a recall of all the formulas, because only formula will help you. So how it is helping you? By practice also. So you need to do a lot of formulas, write all formulas into 1 pages, 2 pages, or whatever the pages it is, and then revise it, and second is practice. So keep the 2 mantras into yours. One is note the formulas after knowing the concept. So first अपना formulas write करो, second practice करो, बहुत सारी practice करो using the test series, the wonderful test series like this. So let's move to the fifth question. It is a capacitor of capacity C1. Again हमें क्या दे दिया? Capacity दे दी C1 is charged up to V volt, then connected to an uncharged capacitor of capacity C2. Basically we have suppose two capacitors. This is our C1 and this is our C2. So what they did is they simply they charged this particular C1 with some voltage V and then connected to this C2, which is completely uncharged. So, okay, we got the scenario. Now what happens? Then find the potential difference across each will be. Now we need to find the potential difference between these three. So again, it is a question from the potential. So how can we find this? To find this common potential, we can directly apply that, because it is in combination now. So we can find C1 by C2 upon voltage, because we know that it is, the potential is given by is finding by C by V. So sorry, CV. So this CV. So C1 plus C2, because it's the combined capacitance now. C1 plus C2 V is equals to C1 V1 plus C2 V2. Again, we need to find the V. So V is equals to, we can substitute the other values to the right hand side. It will become C1V plus C2. It is 0 because it is uncharged, right? So upon my C1 plus C2. So this complete situation, this will become complete 0. The situation will become C1V by C1 plus C2. This is the correct answer for it. So accordingly, if I talk about what should be the correct answer, we can match it with our keys, and the keys that we find is this third option. This is your correct answer. So we have done the 5 questions, and those are very simple and very easier way, right? So let's move to the 6th question. 6th question is, when air is replaced by a dielectric medium of a force constant A. So what is given? We have given the force constant. The maximum force of attraction between two charges are separated by the distance. We need to find what is the maximum force of attraction between the two charges, which is separated by some distance, right? So let's solve it. So it either it decrease, it increase, it's same, or it becomes something 2 times, 3 times, 4 times, and the value is given like this. So we need to find this. How can you find this? What should be the right approach for doing it is, again, mention the formulas. So in air, what is the formula? This question is from a simple electrostatic force. So again, we can find what is the force, which is our Coulomb's law. Now, what does Coulomb's law state? There is a
there's some Coulomb's law basically states the electric force. What is the formula for electric force? The charge that is Q1, the charge that is Q2. So suppose there is two charges, 1 and 2. They are placed some distance r. So they apply a force between them. Either they are attracting or they are repelling, right? So for attraction repulsion we have a formula, and that is stated by the Coulomb's law, which is 1 by 4 pi epsilon naught charges on 1, charges on 2 upon में r square. R square means the inverse square of the distance between them. ठीक है? So in air the formula is this, but if it is in a medium, we have placed something into honey or something in some place, then they have something into it. So we can write it formula Fm is equals to 1 by 4 pi epsilon, that constant quantity, and then Q1 Q2 by kr square, and this k is basically the force constant. Okay, so let's have a ratio of it. If we divide Fm by F air, we can see all the quantities cut out, we only get 1 by k left over it, right? So from there we can find this Fm. What is the force on the medium? Because we need to find that only. So if we cross multiply it, we can find this Fm is equals to F air by k. So that means you can see this Fm in k. One thing I also want you to clear is, suppose this is quantity A is equals to B by C. This is not with this question, but this can be applicable on all the question, all the statements. So if I talk about this A and B quantity, what you can find is, whenever we have situation like this, there is something which is equals to numerator by denominator. So this A and this numerator will these are the friends. So I marked with the green color. Whenever the things which is equals to just opposite to them, बिल्कुल सामने वाले एक दूसरे के सगे अच्छे best friends होंगे, like the best friends you already have in your life, right? So जो सामने वाले होंगे they are friends. If B बढ़ेगा तो A भी बढ़ेगा, A डूबेगा तो B भी डूबेगा, because they are friends, they always साथ साथ चलेंगे. ठीक है? तो कोई भी सिनेरियो में कोई आपने सामने होगा तो वो फ्रेंड्स होंगे और वो एक दूसरे के बिल्कुल पैरेलल सेम टू सेम चलेंगे. नेक्स्ट इफ आई टॉक अबाउट ये डिनोमिनेटर वाले का क्या होगा, जो ये डिनोमिनेटर वाला होगा C, ये A और C. सो A और C दे आर द दुश्मन्स. ओके, सो दे ट्रीट लाइक अ दुश्मन. और वो कैसा रहेगा, अगर A बढ़ेगा तो दुश्मन क्या होता है, हमेशा अपोजिट चलेंगे, तो C जो होएगा वो डूबेगा. दैट मीन्स इफ A विल ग्रो C विल डाउन. So अगर हमारा पास C बढ़ेगा तो A down. So basically this concept is very easy. This is simple. If A increases, B is also increases. But if A increases, C decreases because it is in denominator. So हमेशा याद रखना A और आमने सामने वाले बेस्ट फ्रेंड्स हैं, नीचे वाले जो होंगे वो हमारे दुश्मन रहेंगे. ठीक है, अपोजिट चलेंगे. तो इससे आपको ध्यान रहेगा किसी भी सिनेरियो में. So let's apply into it. यहाँ पर हमारी सिचुएशन क्या बना, Fm इज इक्वल्स टू एफ एयर बाई के. दैट मीन्स दिस Fm और K ये आपस में एक दूसरे के दोस्त है, दुश्मन. अगेन ये दुश्मन है बिकॉज इट इज इन डिनोमिनेटर. दैट मीन्स इट विल डिक्रीजेज इफ Fm increases, right? If force increases, that means this case decreases because it is in denominator and we know it is a dushman, right? So this Fm and K, we can see it decreases how many times? Since it's K is written here, that means it is decreases by K times. So the answer is, you know that it's K times. So so you will get confused between this 1 and 2. Now it's very easy. Since it is in a denominator with Fm, that means it is a dushman and that means it is decreasing. And if it is decreasing, we easily know that this would not be the correct answer. Option number 1 is your correct answer. Fine. Okay, let's move to the next question. That is the question number 7. What should be the characteristics of the fuse wire? Now we know that we have a fuse wire everywhere in our homes also. Okay, if you never see anyway, just जाओ and go have a look over the fuse wire. हर किसी के घर में रहता है. ठीक है? So what does this fuse wire? Fuse wire basically कभी भी लाइट जाती है, देखिए ना, फ्यूज उड़ गया बोलते हैं. फ्यूज उड़ गया मतलब कि हम ये फ्यूज क्या प्रोटेक्ट करते हैं हमारे घर को. दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हाई वोल्टेज, हाई करंट्स. ठीक है, सो फ्यूज वायर मस्ट बी सॉलिड होना चाहिए, तभी तो वो प्रोटेक्ट कर पाएगा, राइट? सो फ्यूज वायर की हमें कैरेक्टरिस्टिक्स बतानी है. इनमें से क्या है, पहले तो हम थोड़ा वैसे समझने की कोशिश करते हैं. क्या फ्यूज वायर, देखो सोच के देखो, फ्यूज वायर हमारे पास आ रहा है, अगर इतना तेज करंट आ गया तो इट शुड बी इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कि वो मेल्ट ना होए, ताकि हमारे जो है सारे अप्लायंसेस घर के वो सेफ रह सके, राइट?
सो जो फ्यूज वायर ऐसा होना चाहिए जिसका बहुत ज़्यादा जो मेल्ट ना हो इजीली, जितना मर्जी हाई करंट पास हो जाए, लाइक एनी अमाउंट ऑफ हाई करंट विल पास थ्रू इट, इट शुड नॉट गेट मेल्ट. सो दैट मीन्स इट शुड बी हैव वेरी लो मेल्टिंग पॉइंट. So in some cases students, what you do is you find it as a high, you will think it is a high melting point कि high melting point होगा तो हम use करें, but no, it has a low melting point, right? So fuse wire is made such that it does not melt away with the passage of high current, hence it has a low melting point. Then उसके बाद हम बात करते हैं resistance की. Resistance means रुकावट, right? कि रुकावट आ जाए. तो इसका मतलब fuse wire does not allow current passing. अगर बहुत तेज करंट आ रहा है, अगर वो पास कर दिया तो हमारा यूज़ क्या हुआ फ्यूज़ वायर का, है ना? फ्यूज़ वायर को तो हमें रोकना चाहिए. फ्यूज़ वायर को अगर बहुत हाई करंट आ रहा है उसको रोकना चाहिए उस करंट के लिए. दैट मीन्स उसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होना चाहिए ताकि वो उस करंट को पास ना होने दे. पास हो गए तो सारे बल्ब सब बुझ जाएगा, सब का सब अप्लायंस फूक जाएंगे, ठीक है? सो फ्यूज़ वायर डज नॉट अलाउ करंट थ्रू इट, हेंस इट हैज़ अ हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. सो वी गॉट अ 2 पॉइंट. वन इज लो मेल्टिंग पॉइंट, सेकेंड इज हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस. So according to that, if we saw the high melting point, high specific resistance, this is the first scenario. The next scenario means wait, okay, so next scenario, so that means which is the question, no, we have a low, so this option cut out. Low melting point, this is okay, but low resistance, no, हमें तो high resistance चाहिए ताकि current pass ना कर सके, तो this is also wrong. Low melting point, correct. हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, कि बहुत ज़्यादा हाई स्पेसिफिक रेजिस्टेंस हो, ठीक है? सो दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू दिस यू हैव ऑप्शन नंबर 4 विच स्टेट्स ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट. सो दिस विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके, लेट्स मूव टू द 8th question. 8th question now. So what is given in the question? A resistance of the 4 arms P, Q, R and S in a Wheatstone bridge. So this question is from the Wheatstone bridge, that means from the current electricity chapter. Okay, so Wheatstone bridge given है, पी क्यू आर एस उसके आर्म्स हैं, और उनमें जो है हमारे रेजिस्टेंस कितने गिवन है? 10, 30, 30 एंड 90 ओम्स के 4 रेजिस्टेंस है. द ईएमएफ एंड इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द सेल आर 7 वोल्ट एंड 5 ओम्स. सो आपको ईएमएफ दे दिया 7 वोल्ट का, इंटरनल रेजिस्टेंस दे दिया 5 ओम्स का. इफ द गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस इज 50 ओम्स, सो दीज ऑल द थिंग्स दैट इज गिवन, वी नीड टू फाइंड व्हाट इज द करंट ड्रॉन फ्रॉम. इट्स वेरी सिंपल. कैसे करेंगे? Again, first we draw the diagram. You can see we have applied PQRS as a 4 resistance and 7 volt, and this is our EMF, and 5 ohms. It is our internal resistance, and galvanometer is also attached, so which give a 50 ohms resistance. Okay, so V is given as 7, R is given as 5 volt, which is. So now we need to find first we need to find R equivalent, because their resistance in series also, parallel also. So first we can conclude a equivalent resistance, and then we can directly apply to the formula. So what happens? This R equivalent, this is equals to 40 multiplied by 120. We directly applied the formula, we put the values, and from here we get the R. Let's not solve this R first. We can solve in the next step. You can solve it in the first go only. It's totally up to your wish. So I is equals to V by R. We know this is the formula that Ohm's law states. Okay, so Ohm's law is V by R. V is given as 7, R is given as this that we have find. अगर R directly सीधा डाल दिया तो पूरा क्वेश्चन गलत हो जाएगा. और R डालोगे भी कैसे? Because we have 4 R's given. तो पहले एक डालोगे, दूसरा, तीसरा, चौथा, तो पूरा कंप्लीट कंसेप्ट गलत हो जाएगा. इतना बड़ा क्वेश्चन हो जाएगा, और जो कि एक कंसेप्ट भी नहीं है. आपको इतने सारे रेजिस्टेंस दे रखे हैं. We will not choose any one by your own. So we need to find an equivalent resistance. Equivalent resistance निकाला हमने यहाँ पर. If we solve this complete, we just simply get the values, and this is a simple answer. It's look like a very tough, long question, but the answer you can see just simple one-liner answer. So you will get 0.2A as your perfect answer. Fine. So let's move to the next question, which is this. So this states, when a piece of aluminium wire of finite length is drawn through a series of dies to reduce its diameter to half its original value, what does the resistance will become? So we have an aluminium wire, okay, of some length, finite length, some length, we know its length, and it is drawn through a series of dies to reduce its diameter. So what we can do, we are reducing its diameter. If we reduce this value, means we are thinning it, we are thinning this wire.
So if we are thinning this wire, its original value, diameter to half to its original, the resistance will become. What does the resistance become? Okay, so we know that the resistance is that, again, this is a concept based question, and so the resistance is inversely proportional to the square of the diameter in stretching wire. So whenever we are stretching some wire, whatever the resistance, it will inversely proportional to the square of the diameter that the particular wire had. So if the diameter reduced to half of its original value, so the resistance will become 2 to the power 4. That means 2 to the power 4 means 2 into 2 into 2 into 2, and it will become 16. So this is the 16 times. So the correct answer is simple. The question, the option number 4 is the correct answer. Also, please match with the answer keys with the attempts that you have given, so that you will have an idea from like where you went wrong or what did you do wrong to do not get this answer done. Next question. So let's move to the 10th question, which is a wire X is half the diameter and half the length of the wire Y is of similar material. The ratio of resistance of X to that of Y is what? So what does the question state? Basically this question is from the resistance of the wire, means current electricity chapter. So the question says the wire X is half the diameter. We have some wire and the diameter is half, and half the length of the wire Y of so we have similar material, and it is the half the length of the wire Y. We need to find the resistance of X and Y. It's simple. First, we know how can we solve this. First, apply the approach. What will be the correct approach for this? The approach will be, first we can find R. What is the formula for R? It is rho L by area, right? And the area, we know it is pi r square. We can write it by, so see what is R? R resistance. What is the formula for R? It is rho means resistivity L by A. Rho L. This is the formula for finding resistance. So what you can do is, give me a second. I'm writing it again. So this resistance R, this is equals to rho L upon A. This will be the formula for it. Okay, so now what happens? What is the formula of area? It is, what is the formula? It's pi r square. Let me write it here. The formula for area is pi r square, and we didn't know. We are talking, I don't know why I'm not able to writing 2 here. So this is the formula for area. It's very simple, and you have studied in your 9th class as well. Okay, so this R is the radius, but we are dealing with the diameter. In the question, it is given as a diameter. So diameter is basically the double of it, right? Because whatever the circle it is, from center, this is the R, and radius is the double of it, right? If from here, it will get doubled. So that means R means, R is the half of, radius means half of diameter. So I can write pi, I can write it d by 2. This is my d, this is d by 2, and then square. If I do it square here, this d square and 2 square become 4. So it will become pi d square by 4. So that's why we have written it here is pi d square by 4. If you are confused how we write d square, pi d square by 4. So this R is equals to rho L by pi d square by 4. So from here we can see this. See, this resistivity is a constant value. So let's ignore this and multiply it by directly proportional. So R proportional to L by d square from here, because pi is also constant, 4 is also constant. So we have excluded all the constant values and write only the variables quantity. So again, like I told you, सामने वाले दोस्त, नीचे वाले दुश्मन, है ना? So that means अगर resistance बढ़ेगा, length बढ़ेगा. जितनी लंबी length, उतना लंबा resistance. And D is the दुश्मन डिनोमिनेटर में, है ना? तो डायमीटर का स्क्वायर जितना ज़्यादा बढ़ेगा, रेजिस्टेंस उतना कम होगा. सो यहाँ से भी एनालाइज तो कर सकते हैं, बट हमें यहाँ पे एनालाइज नहीं करना. वी नीड टू फाइंड द रेशियोज हेयर. सो रेशियोज निकालते हैं. अभी हमने रेजिस्टेंस का फॉर्मूला तो निकाल लिया. नाउ वी हैव 2 वायर्स, एक्स और वाई. तो हम दोनों को एक्स और वाई का निकालते हैं, दोनों को रेशियो में लेते हैं. सो आर एक्स का हम निकालेंगे तो ये एल बाई डी को लेके चलते हैं. सो इट इज़ एल एक्स बाई डी एक्स स्क्वायर. आर वाई को निकालेंगे तो एल वाई बाई डी वाई स्क्वायर, है ना?
क्या क्रॉस हो रहा है यहाँ पर? कुछ भी क्रॉस नहीं हो रहा अभी तक तो यहाँ पर हमने क्या ले लिया, ये Ly/2 है, ये डी जो हमारा d होगा y का वो बाई 2 का स्क्वायर, यहाँ पर dy स्क्वायर देखो x की हमें दे रखा है, x क्या है, हाफ द डायमीटर, जो डायमीटर का हाफ है, दैट मीन्स वी कैन राइट इट एज लाइक दिस एंड नाउ वी हैव द सेम वेरिएबल सो दैट वी कैन इजिली कट आउट. हम कट आउट करते हैं एक्स्ट्रा एंड व्हाट वी गेट, हेयर वी हैव 2 एंड हेयर वी हैव 1. दिस 2 इज इन, ये डिनोमिनेटर के भी डिनोमिनेटर में है तो ये न्यूमरेटर में चला जाएगा, दैट्स व्हाई इट कम्स अप एंड वी विल हैव द वैल्यू 2/1 एंड विच कम्स आउट टू बी 2:1 which will be your correct answer. So accordingly question option number 3 will be your correct answer. So we have done 10 questions yet. Any confusion, any doubts, you can write down in the comment section. I can help you out in the comment section as well. Okay, and you need to solve similar questions using different test series. Basically this is the part 4 test. You can solve it into other test also, test number 5, 6, 7. Practice as much number of questions you want to. It is a key to get with for your NEET. Okay, so next question पे चलते हैं, which is our question number 11. What does it says? If a specific resistance of a potentiometer wire is 10 to power minus 7 meter. अगर हमारे पास रेजिस्टेंस पोटेंशियोमीटर का स्पेसिफिक रेजिस्टेंस दे दी 10 to power minus 7 meter. Current flowing through it is also given 0.1 ampere. Cross sectional area of the wire is also given 10 to power minus 6 meter square. Then what should be the potential gradient that we'll need to find? So simple. क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि क्वेश्चन कहाँ से है, पोटेंशियल ग्रेडियंट से है ना. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला पहले तो अप्लाई करते हैं, फिर सोचते हैं कि इसमें से आंसर निकल रहा है वरना हमें कोई और अप्लाई क्वेश्चन को कोई और मेथड को देखना पड़ेगा. तो पोटेंशियल ग्रेडियंट का फॉर्मूला क्या होता है, वी ए माइनस वी बी बाई एल. इट्स सिंपल फॉर्मूला वी बाई एल, राइट. सो अभी आप सिर्फ पोटेंशियल ग्रेडियंट पढ़ रहे हैं, बट व्हेन यू गोज इन द हायर क्लासेस यू विल फाइंड ग्रेडियंट ऑफ सो मेनी थिंग्स. बहुत सारी चीज़ों के ग्रेडियंट्स पढ़ेंगे, अभी सिर्फ पोटेंशियल तक रहते हैं. So potential gradients means V A minus VB by L. So that means I can also write it as I into rho by A. यहाँ पे हम values put करेंगे which is all given. I is also given 10 to power minus 7. Rho is also given. So it's 0.1. You can see rho is also given, specific resistance and area. It is also given 10 to power minus 6. That means आपको radius नहीं दिया, वो ये सब नहीं दिया कि आपको एरिया निकालना पड़े. एरिया इज डायरेक्टली गिवन, सो यू जस्ट इट्स वेरी सिंपल. आपको सिंपली पुट करना है. अगर आर दिया होता है तो हम उसको एरिया निकालते हैं, फिर यहाँ पुट करते हैं, थोड़ा लंबा हो जाता है. सो इन दोज केसेस अपना टाइम को सेव करना, क्वेश्चंस को देखना कितना बढ़िया क्वेश्चन दिया है कि आपको सब कुछ दे ही दिया, आपको निकालने की भी ज़रूरत नहीं है ना. So in that cases be lucky and find yourself as a lucky one and don't waste your time here in spending other things. You can use your time. See in such questions which are very short and very straight to the point, you can directly put the values, get the answers. One thing, make sure don't be overconfident, because in some cases of overconfidence we do some calculation errors and this will like completely आपका आंसर नहीं निकलेगा. फिर आप इसी सिंपल क्वेश्चन पे आप 10 मिनट तक टाइम वेस्ट करते रहोगे. सो बेटर है ऐसे जो क्वेश्चन होते हैं इनमें अपना बिल्कुल स्मूथ क्वेश्चन सोच के खुश हो, बट बहुत खुश नहीं होना, उसको सॉल्व करो ताकि आंसर 1 गो में निकल जाए, सेकंड थर्ड गो की अटैम्प्ट की कोशिश ना रहे. ठीक है, वो सेकंड थर्ड गो वाला अटैम्प्ट हम लगाएंगे ऐसे थोड़े हार्ड से क्वेश्चंस के अंदर जहाँ पे बहुत सारे कंसेप्ट्स लगते हैं. ओके, सो अब यहाँ पर हम सॉल्व करेंगे एंड इट्स सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन. वी कैन सिंपली कट इट आउट एंड वी गेट द वैल्यू एज 10 to power minus 2 volt per meter, and accordingly your option number 1 will be your correct answer. Okay, so let's move to the question number 12th. So in question number 12th we have given in the network shown. So this question is from the network of networks means we have given a circuit diagrams having multiple connections. That means this question is from combination of the resistance in our current electricity chapter. So the network shown, each resistance is equals to R. We have given as R the equal resistance we need to find between this corner A to between this corner D. We need to find this corner. इन दो कॉर्नर्स के बीच में कितना जो है, ये दोनों एडजेसेंट कॉर्नर्स है, मतलब साथ साथ के पड़ोसी हैं. सो इसके अंदर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा इस ए और सी के अंदर. ठीक है, कि कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस के अंदर हमारे चैप्टर में से आ गया ये क्वेश्चन. अब कैसे निकालेंगे इसको हम, जस्ट गिव मी अ सेकंड.
दिस इज आवर क्वेश्चन नंबर, वेट, अभी हम चल रहे थे 12th क्वेश्चन पे. सो दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12 और ये रहा डायग्राम, जिस डायग्राम का फीड था हमें. सो इस डायग्राम के अंदर आप देखो, ये हमने डायग्राम बना दिया यहाँ पर, ए बी सी डी सारा दे दिया. इक्विवेलेंट हमें सर्किट, हमें यहाँ पे सर्किट गिवन है. अगर मैं बात करती हूँ, ये बीच में सेंटर ओ ले लेते हैं, इस ए ओ और इस डी की, ठीक है. इफ इट इज ए ओ डी, तो हमारे पास क्या रहेगा, रेजिस्टेंस कितना होगा, इसमें दो ही है, आर और आर है, सिर्फ दो रेजिस्टेंस यूज हो रही है. एंड दिस दो रेजिस्टेंस ये पैरेलल में है इस नीचे वाले रेजिस्टेंस के, विच इज डायरेक्टली कनेक्टिंग ए और डी. तो इन दोनों, ये दोनों आपस में किस में है, हमारे ये जो आर और आर को हम प्लस कर देंगे सिंपल, और ये पैरेलल में हमारे इस वाली रेजिस्टेंस के साथ. तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस कितना आ गया, हम इसको R1 मान लेते हैं. इट विल बिकम 2R इंटू आर, 2R इंटू आर, दैट मीन्स 2/3R. ये हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आ गया. सो रेजिस्टेंस ऑफ द आर्म ए बी सी और सी डी, इनका भी कैसे निकलेगा, अगर हम R2 निकालते हैं इनके बीच का, इट इज सिंपल R. ए बी का तो देखो सिंपल है, ए बी के बीच में तो एक ही है ना, सिर्फ R, देन 2/3R प्लस R, तो इट विल बिकम 8/3R. अब रेजिस्टेंस R1 और R2 पैरेलल में थे, तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस पैरेलल में है, तो फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, R3 इज इक्वल्स टू R1 इंटू R2, R1 प्लस R2. इनके फॉर्मूलाज हमने ऊपर निकाले, जस्ट दैटली पुट इट हियर एंड सॉल्व इट. If we are solving it, resolving it, we get the values at 8/15R. थोड़ा सा कैलकुलेशन, थोड़ा सा मतलब ये जो है मग्ड अप करने वाला है, अदरवाइज इट्स वेरी सिंपल. सो वी गॉट द वैल्यू, हमारे पास आंसर निकला था 8/15R, मीन्स क्वेश्चन नंबर 4, ऑप्शन नंबर 4 इज योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन, 13th क्वेश्चन, which states a charged particles move through a magnetic field in the direction perpendicular to it. क्या हो रहा है यहाँ पर, देयर इज सम चार्ज पार्टिकल विच इज मूविंग थ्रू अ मैग्नेटिक फील्ड. तो कोई एक मैग्नेटिक फील्ड है, सपोज एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है इन अ डायरेक्शन, इसमें बिल्कुल परपेंडिकुलर. सपोज दिस इज माई चार्ज पार्टिकल, दिस इज माई मैग्नेटिक फील्ड, ओके, एंड दिस इज मैग्नेटिक फील्ड, एक परपेंडिकुलर के अंदर यहाँ पे मेरा चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है. इन दैट केस व्हाट शुड बी देयर, वेलोसिटी चेंज, स्पीड चेंज, डायरेक्शन चेंज, एक्सेलरेशन अनचेंज, 4 ऑप्शंस गिवन है. ओके, सो इस कंसेप्ट में आपको क्या ध्यान रखना है कि मैग्नेटिक फोर्स जो है, पहले तो फॉर्मूला के हिसाब पे जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, इफ आई एम राइटिंग एफ एज अ मैग्नेटिक फोर्स, जो मैग्नेटिक फोर्स होता है, सिंस द मैग्नेटिक फोर्स एक्स परपेंडिकुलर टू द वेलोसिटी, ये हमेशा वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में लगता है ना. तो स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स अनचेंज, क्योंकि ये तो होता ही ऐसा ही है ना, ये हमेशा परपेंडिकुलर ही होता है. द स्पीड ऑफ द पार्टिकल्स अनचेंज रहेगा, बिकॉज magnetic force जो है, it is always perpendicular to the velocity only. So that means according to this your option number C, you will get confused between 1 and 2 options. ये थोड़ा सा उसको confusing दे दिया. Option number 1 कहता है velocity remains unchanged, option 2 कहता है speed remains unchanged. तो इसमें देखो डायरेक्शन का चक्कर नहीं है तो थर्ड नहीं होगा, एक्सेलरेशन का चक्कर नहीं है तो फोर्थ नहीं होगा. Now you got confused between 1 and 2. कहाँ जाओगे, कौन सा चूज करोगे. सो वेलोसिटी रिमेन्स अनचेंज. वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी ऐसे याद रखो, वेलोसिटी का सिंपल भी वी से है, वी मीन्स 2 मीन्स इसमें दोनों चीज़ें होती है, इसमें वेलोसिटी मतलब स्पीड भी होती है और डायरेक्शन भी होती है. अब डायरेक्शन का तो चक्कर ही नहीं है यहाँ पर, दैट मीन्स वेलोसिटी का कोई रोल नहीं है. दैट मीन्स योर ऑप्शन नंबर सेकंड इज द ओनली करेक्ट आंसर, बिकॉज ओनली द स्पीड ऑफ द पार्टिकल रिमेन्स अनचेंज. फाइन, ओके, लेट्स मूव टूवर्ड द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज क्वेश्चन नंबर 14. Okay, so question number 14 says, if an electron describes half a revolution of a circle in a radius R in a magnetic field B, the energy acquired by it what? Energy क्या रहेगी इसकी? So simple, ऐसे से questions जिस टाइप के भी होते हैं, मतलब most of the things आप देखो इतने concept दे दिए इन्होंने, it's under a very easy question because it's simply zero. How? See, like I told you in a previous question also, magnetic field जो होता है is always perpendicular to the velocity of electron. Suppose ये magnetic field है, it is always perpendicular to the velocity of particular electron. मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वेलोसिटी घूम रहा है उसके बिल्कुल परपेंडिकुलर में हमारे मैग्नेटिक फील्ड होगा. मतलब यहाँ पे अगर ऊपर मेरा चार्ज पार्टिकल घूम रहा है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, कुछ भी चार्ज पार्टिकल, either it is electron or something else, if it is moving तो इलेक्ट्रिक जो हमारा मैग्नेटिक फील्ड कहाँ होगा, इसके जस्ट बिल्कुल परपेंडिकुलर में यहाँ होगा. तो ऐसे सिनेरियो, इट्स लाइक अ सिनेरियो लाइक दिस. ओके, सो इन दैट केसेस ये हमने पढ़ा है. सो इट कैन ओनली चेंज इन द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन
हमारा इलेक्ट्रॉन की वेलोसिटी की डायरेक्शन तो चेंज हो रही है, बट कैन नॉट एक्सेलेट और डी एक्सेलेट नहीं हो रहा, तो एनर्जी एक्वायर्ड कितना होगा, 0. एक्सेलेट मतलब कि यू ऑलवेज लाइक आई होप और आई अज्यूम you drive a scooty or a bike. If not, you can saw your parents, your family members, or older drivers, or anyone. They are whenever they are riding something, they are either speed up, that means they are accelerating it, they are changing the velocity, or they are de-accelerating it, that means they are slowing it down, they are again changing the velocity but in the negative direction. So in that means there is no acceleration or de-acceleration means de-acceleration means in the downward direction. So in that particular scenario there is no acceleration, no de-acceleration, that means there is no energy required, है ना, energy चाहिए ना उसको करने के लिए, there is no energy required, that means it will become 0 only. Option number 1 is your correct answer. Now let's move to the 15th question, which is a magnetizing field of this ampere per meter, this is given, produces a magnetic flux density of 8 Tesla. We have given density also in an iron rod. The relative permeability of this rod will be, we need to find relative permeability. So see, this chapter is from magnetic field? No, this is from magnetism, because in this particular question we are particularly know about something like a magnet. We are dealing with magnet because this kind of concept is in magnetism only. Okay, so in this particular scenario it's very simple. Simple means that we need to find the thing which is, it is directly, they are asking the thing directly, what is the relative permeability of this rod. So it is very simple. Now directly first we need to find what is the formula for relative permeability. You can see this nu r is the relative permeability, and the formula is nu by nu naught. We can also write it by b by h nu naught. Now we have given the values, just put it here. Nu r is equals to 8 Tesla, which is given by 8 pi by 4 pi into 10 to power minus 7, 2 into 10 to power 3. We have converted this 8 Tesla into 10 to power minus 7, so that when we are resolving this, we get the value as 10 to power 4. That means your option number 4 is your correct answer. Okay. Okay. So let's move to the 16th question, which says, if a magnetic dipole of a moment m situated in the direction of a magnetic field B is rotated by 180 degree, means what happens? A magnetic dipole of a moment m is situated in direction of we have some magnetic dipole and we have put that into a magnetic field of some B, and it is rotated through 180 degree. That means it is rotated to like from this to this, like this 180 degree. How much amount of work the particular thing has done? So you can see it is in an initial stage it is at 0. From here it is suppose 0. Now it's moved from here to here 180 degree na, so it is from here, this is our 0, from here to here it is moving, right? So this is our 0 degree and it will become 180 degree. So what is the angle of theta here? It's 180 degree. Okay, so what is the angle of theta here? This theta, let me remove it. So we have theta 1 as 0 degree, theta 2 is 180 degree, because like I told you, suppose this is my pen, this is initially like this, having the angle 0 degree. Now it moves from this to this angle will become 180 degree, right? So theta 1 is 0 degree, theta 2 is 180 degree, and work done is mb cos theta. Now we have change in theta, so we can write cos theta 1 minus cos theta 2. So what we can put here, W is equals to mb cos theta, we can put the value of theta 1 which is 0 degree, theta 2 which is 180 degree. So this comes out to be W is equals to 2 mb, because this if we are putting this value, this comes out to be 2, so it will become 2 mb. So according to that, simple, your option number 2 is the correct answer. Okay, so let's move to the next question. The next question says, okay, Lenz's law provides a relation between this, a very straightway question that needs a theory knowledge. So you need to know about what is the Lenz's law. Lenz's law, what does it gives? This question is directly from EMI, electromagnetic induction, right?
So this lens law provide relation between these which two factors. So instead of reading these four options which will muggles you up, it's better to first think what is the lens law and what does the relation give. So it gives the relation between EMI and magnetic flux. It gives the formula, जितनी magnetic flux जा रहा है उतना EMF induced होगा in opposite directions, right? So simple. आपको क्या 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 given है इसके अंदर? EMF भी given है और magnetic flux, इन दो चीज़ों के बीच में वो relation बताता है. फिर वो ढूंढो कहाँ पर है. Current और magnetic field के अंदर no. Induced EMF right, magnetic flux right. So when अब दोनों ऑप्शन पे जाओ ही ना, बट अगर थोड़ा सा डाउट है तो एक बार चले जाना. फोर्स ऑन अ कंडक्टर मैग्नेटिक नो, इंड्यूस्ड ईएमएफ में बताता है बट करंट नहीं बताता. क्या? मैग्नेटिक फ्लक्स के बीच का रिलेशन बताता है. सो दिस 2 and 4 इज कंफ्यूजिंग वन, बट वी नो द आंसर इज सेकंड वन. ओके okay, so let's move to the question number 18th. In question number 18, two pure inductors, each of self-inductance L are connected in series. The net inductance is a very simple question. क्या दे दिया आपको? दो इंडक्टर्स दे दिए, मतलब कि एक यहाँ पर दे दिया, एक यहाँ दे दिया, दोनों को सीरीज में लगा दिया. सिंपल सा, इन्होंने कुछ घुमाया ही नहीं. आपको सिंपल पता होना चाहिए अगर इसका L है इसका भी L है. सोचो, इसमें कुछ इन्होंने टिपिकल सा भी नहीं दिया. ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम्स के अंदर. इट जस्ट आपकी हाइप इतनी ऊपर होती है कि हाँ पता नहीं कैसा होगा, बट वो क्वेश्चन बहुत ईजी होते हैं. दे आर डायरेक्टली स्ट्रेट वे होते हैं. कंसेप्ट को ध्यान रखना है. अगेन आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट go with the concepts. Second, write down all the formulas. Third, do the practice. This is the only key for your success. Okay, so from L we are putting it into a series. So what happens? What is a net inductance? Net inductance means this question is from combination of inductors, AC chapter, right? So whenever we are grouping some inductors, that means it's simple. Inductors is simply like resistors. So if we are grouping inductors, means if we are grouping the resistors, and that means this is simply if we need to find the net, the equivalent inductance, we need to simply add on. So the equivalent inductance L is equals to L1 plus L2, means L plus L means 2L. A simple 2L is the correct answer. That means it's like a 10-second answer. Okay, let's move to the question number 19th, which says the power factor in a circuit connected to the AC. A power factor in a circuit connected to an AC. The value of power factor is, what is the value of power factor? So this question is from AC and the top LCR circuits, because here it's a power factor. So we know that the power factor formula is cos theta is equals to R by Z. This Z is the impedance, right? This is the impedance. So the formula for Z is R square plus XL minus XC, and it is a whole square. Here, if there is only in resistance, then we can say this will cut it out, and this square is cut by this under root. We have only Z is equals to R. So Z is equals to R given, so we are putting R here. This will also cut, it will become 1. So that means cos theta will become 1. So that means we have the 1 unity, right? So that means unity when the circuit only in ideal inductance, no, because there is only resistance. When only resistance is there, then only these two quantities cut out ना. अगर सिर्फ resistance अगर ये रहेगा तो बहुत complications बन जाएगा, है ना. C रहेगा तो भी बहुत complication, ये equation इसके बराबर नहीं आएगी. कब आएगी? जब सिर्फ R अकेला बचेगा, तो उसके लिए इन दोनों को तो जाना ही पड़ेगा. That means only जब resistance होगा तभी unity पे होगा. So that means unity when the circuit contains an ideal resistance only. Fine. इतनी इस इक्वेशन से देख लेना, इतनी भयंकर सी इक्वेशन है, सारी चीज़ें हट जाएंगी, सिर्फ R के बराबर होगा तभी ना. तो यही आंसर था. लेट्स मूव टू द 20th क्वेश्चन, विच इज अ कंडक्टर ऑफ अ लेंथ 0.4 मीटर इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 7 मीटर पर सेकेंड परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ इंटेंसिटी दिस. अगेन क्या क्या गिवन है? लेंथ गिवन है, स्पीड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी गिवन है, इंड्यूस ईएमएफ बताना है आपको इसके अंदर. चैप्टर क्वेश्चन इज फ्रॉम चैप्टर EMI, है ना. सो लेंथ गिवन है 0.4, स्पीड गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड, तीनों चीज़ें गिवन है. हमें क्या निकालना है? इंड्यूस ईएमएफ. अगेन अपनी उस डायरी में से, अपने उस पेजेस में से फॉर्मूला देखो. ईएमएफ का फॉर्मूला क्या होता है? इट इज BLV cos थीटा. थीटा इज 0 डिग्री है ना. So put karo values. B is 0.9, L is 0.4, V is 7, and then cos theta. Solve it and you get the value. A simple mathematical term. You will find 2.52. That means option number 2 is the correct answer. So let's move to the 21st question.
The coil has a resistance 30 ohms. We have given 30 ohms and inductive reactance of 20 ohms at 50 hertz frequency. This is given. If an AC source of 200 volt, हमने एक AC सोर्स लिया 200 वोल्ट का और 100 हर्ट्ज का, उसको कनेक्ट कर दिया उस कॉइल के साथ, करंट कितना होगा उस कॉइल के अंदर फिर, ठीक है. कैसे करेंगे देखो, अगर हमने इसमें ओमेगा 50 लिया, इफ ओमेगा इज 50, यहाँ पर हमने लिया था ना, ये ना 50 हमने लिया, तो ये बन जाएगा क्या, ये रहा क्वेश्चन. हाँ चलो, ये इफ ओमेगा इज 50 इंटू 2 पाई, ओमेगा एल हो गया 20 ओम्स, ओमेगा डैश मान लेते हैं हम, इट इज 100, देन इट विल बिकम 40 ओम्स. Then the current flowing through the coil is, current is equals to this 200 by Z. Z is R square by omega dash L square. Just putting the values and we get the value is 4 ampere. That means option number 1 is the correct answer. Okay. Now let's move to the 22nd question. In an LCR series, AC circuits, so we have given LCR series, basically we know chapter is from alternating current. So in a LCR series AC circuit, the voltage across each of the components L, C and R is 50. We have given the voltage 50. The voltage across the LC combination will be what? We need to find. See, up here it is series. That means the degree is the angle between them is 180 degree. So phase difference between L and C is pi, 180 degree. So the net voltage is LC is 50 minus 50, which is 0. That means a simple fault. It's a simple theory plus concept, which comes out in the form of a numerical. Okay, now let's move to the 23rd question. In photoelectric emission process from metal of work function 1.8 eV, which is given, the kinetic energy of most energetic electrons is 0.5. एक photoelectric emission हो रहा है. The question is directly from dual nature वाला chapter, means photoelectric effect वाला chapter. So in this particular a work function given है, work function, the kinetic energy of the most energetic electron, ये जो सबसे energy वाले electrons थे उनकी kinetic energy given है. Stopping potential बताओ क्या होगा, ठीक है. कैसे निकालेंगे? Stopping potential क्या होता है पहली बात तो, स्टॉपिंग पोटेंशियल जो होता है हमारा, जितनी इलेक्ट्रिक काइनेटिक एनर्जी है पर यूनिट चार्ज, मतलब कि काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, मैं ऐसे लिख देती हूँ Q, तो ये हमारा होता है स्टॉपिंग पोटेंशियल बेसिकली. सो हेयर, सो इस सिनेरियो के अंदर हम क्या करेंगे, स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द काइनेटिक एनर्जी. सो हम क्या करें, काइनेटिक एनर्जी कितनी थी हमारे पास, द स्टॉपिंग पोटेंशियल इज इक्वल टू द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट चार्ज, है ना, पर यूनिट चार्ज के अंदर. तो काइनेटिक एनर्जी हमारे पास कितना गिवन है, 0.5. तो हम पर यूनिट चार्ज से करेंगे, तो डायरेक्टली गिवन ही है 0.5. सो इसका तो कोई रोल ही नहीं है 1.8 का, तो 0.5 हमारी को यही तो होती है हमारे पास स्टॉपिंग पोटेंशियल. तो दैट मीन 0.5 वोल्ट इज योर करेक्ट आंसर. घुमा रखा था क्वेश्चन को, क्या पता नहीं 10 फॉर्मूले लगाने लग जाओ, इसको सॉल्व करने लग जाओ, बट इट्स स्ट्रेट वे. इसमें आपका कंसेप्ट यूज होगा, इसमें न्यूमेरिकल्स और ये फॉर्मूलाज कुछ यूज नहीं होंगे. अगर आपका कंसेप्ट पता है तो आपको पता चलेगा कि आपको घुमा रहे हैं, ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन, 24 क्वेश्चन देखो कितना बड़ा सारा सा है, ठीक है. फॉर अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, नाउ वी हैव कम टू द चैप्टर न्यूक्लियस वाला, है ना, न्यूक्लियस पर है. फॉर अ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वर्सेस मास नंबर कर्व, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट होगी. तो हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं और हमें बताना है कि कौन, ये देखो 1 है, 2 है, 1, 2 और 4 सही है, या 2, 3, 4 सही है, या 1, 2 and 3 सही है. चलो देखते हैं. फर्स्ट, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन EBN इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, रेंजेस दिस एंड दिस. सबसे पहले हम इसमें देखते हैं. देखो अगर हमारे पास फॉर 0 से लेकर 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज करती है फिर डिक्रीज करती है, ये हमारा कंसेप्ट हमें पता है, ठीक है. ओके, सो इस हिसाब से अब हमारे पास जो बनेगा वो क्या बनेगा, बाइंडिंग एनर्जी. अब हमें कंसेप्ट पता है कि 0 से 80 तक बाइंडिंग एनर्जी पहले इंक्रीज देन डिक्रीज. सो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ऑफ दिस EBN एंड दिस इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास नंबर, रेंज में 30 and 170 इज एब्सोल्युटली करेक्ट, सही है ये बात. बाइंडिंग एनर्जी इज लोअर फॉर बोथ लाइट न्यूक्लियाई, A जो 30 से नीचे होगा, 170 से ऊपर होगा, अगेन सही है. बाइंडिंग एनर्जी is maximum for about 8.75 for A is 56, yes ये भी सही है. In a region between this the binding energy increases
with mass number, no, it गलत, because it will decreases, है ना. तो ऑप्शन नंबर ए बी सी आपके सही हुए. तो 1 2 3 4 नहीं, ये नहीं सही है. ऐसा हमें ऑप्शन सिलेक्ट करना है जिसमें 3 सही हो. तो 1 2 3 नहीं नहीं, एंड इस केस के अंदर तीनों सही हैं. ठीक है. ओके, नाउ इन द 25th क्वेश्चन, when a p-n junction diode is forward biased. now हमारे पास आगे junctions means semiconductors आगे. ठीक है. so when a p-n junction diode is forward biased, forward biasing कर दी. forward biasing याद है ना. forward biasing means क्या होता है, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ जोड़ना है, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ जोड़ना है. ठीक है. when a p-n junction diode is forward biased, अगर हमने p-n junction ले लिया एक, let me made also, एक p-n junction ले लिया, ये वाला p-n junction, और मैंने इसको कनेक्ट कर दिया, forward biasing कर दी. दिस इज पी एन, पॉजिटिव को पॉजिटिव के साथ, नेगेटिव को नेगेटिव के साथ. इस केस में क्या होगा, वी हैव 4 ऑप्शंस, है ना. तो इसके अंदर देखो क्या होता है, जो अब यहाँ से पॉजिटिव पॉजिटिव में डालेंगे, इट्स अगेन अ कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन. क्या हो रहा है इसके अंदर, आपके डिप्लीशन रीजन और बैरियर हाइट दोनों की दोनों कम हो जाएगी, बिकॉज वैसे जाते रहेंगे ना इलेक्ट्रॉन्स. सो अकॉर्डिंग टू दिस हम क्वेश्चन देखेंगे तो हमारे पास सिंपल फर्स्ट में डायरेक्टली स्ट्रेट वे आंसर दे दिया कि फर्स्ट जो है बोथ द डिप्लीशन रीजन और बैरियर हाइट जो है रिड्यूस हो जाएगा. Okay, let's go with the question number 26, which states the gate for which output is high if at least one input is low. ऐसा कौन सा गेट है कि जिसका आउटपुट जो होगा वो हाई होगा, 1 होगा, if at least उनमें से दोनों इनपुट में से एटलीस्ट कोई इनपुट जो होगा लो होगा, 0 होगा. चाहे ये 1 हो 0 हो, नथिंग मैटर, बट एक कम से कम 0 होगा. तो ऐसा कौन सा गेट है जिसका ये 1 होगा. तो ऐसा कौन सा है, इट्स अ रिलेशनशिप बिटवीन, ये गेट्स के ऊपर से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है. गेट्स तो बिल्कुल ऐसे रट लेना, छोटा सा टॉपिक है, पर इसमें से एक क्वेश्चन 100% आपको मिलेगा. तो रिलेशन बिटवीन ए बी एंड सी शोज, जो सी होगा ए बी के अपोजिट होता है, दैट मीन्स नैंड गेट का होता है ये. तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन 27, temperature coefficient of resistance of a semiconductor is, this question is again from semiconductor. अब आपको दे दिया temperature coefficient एक सेमीकंडक्टर का कितना होता है. ठीक है. पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है. तो टेम्परेचर कॉफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ सेमीकंडक्टर इज नेगेटिव होता है. इट मींस रेजिस्टेंस जो होता है डिक्रीज, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता रहेगा रेजिस्टेंस डिक्रीज होती रहती है. तो इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर 4 नेगेटिव इज द करेक्ट आंसर. लेट्स मूव टू द 28th क्वेश्चन, व्हिच इज the photoelectric work function for a metal surface is 4.125 eV. the cutoff wavelength of the surface is, ये किसमें से आ गया, फोटोइलेक्ट्रिक वाले चैप्टर मींस ड्यूअल नेचर के चैप्टर से आ गया. ठीक है. तो इस चैप्टर के अंदर आपको दिया इन्होंने कि वर्क फंक्शन दे दिया इतना है, कट ऑफ वेवलेंथ बताओ उसकी कितनी होगी. अब वर्क फंक्शन का फॉर्मूला पता है अपने को, क्या होता है, W इज इक्वल्स टू HC बाय लेमडा नॉट. लेमडा नॉट क्या है आपका, मिनिमम थ्रेशोल्ड वेवलेंथ या कट ऑफ वेवलेंथ को हम बोलते हैं, जो हमें निकालनी है इस क्वेश्चन के अंदर. बाकी वैल्यूज तो गिवन है, W गिवन है 1.25 EV. ओके, एंड हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं जूल्स के अंदर. इसको मल्टीप्लाई करेंगे अगर हम 1.6 × 10⁻⁻19 से, वो जूल में कन्वर्ट हो जाएगा. देन आफ्टर कन्वर्टिंग इट वी विल फाइंड, ये सब कॉन्स्टेंट है, पुट द वैल्यूज. लेमडा नॉट निकालने के लिए हमारे पास एच सी सबके एच की वैल्यू गिवन है, प्लैंक कांस्टेंट की. सी वेलोसिटी ऑफ लाइट सबको पता है. ठीक है. एंड लेमडा नॉट हम सॉरी डब्ल्यू हमें दे रखे हैं. सबको सॉल्व करेंगे, वी गेट 300 एंगस्ट्रॉम एज अ परफेक्ट आंसर. फाइन. नाउ लेट्स मूव टू द 29th क्वेश्चन, दैट इज असर्शन बेस्ड क्वेश्चन. असर्शन क्या कहता है, 2 photons of equal wavelength must have equal 2 photons of equal wavelength must 2 photons है ऑफ इक्वल वेवलेंथ, उनका लीनियर मोमेंटम भी जो है वो इक्वल होगा. सेकंड कहता है 2 photons of equal linear momentum will have, अगर 2 photons का लीनियर मोमेंटम इक्वल है तो उसके वेवलेंथ भी इक्वल होगा. सो इन दैट केस यू कैन सी 2 photons of equal wavelength will have equal momentum which is given, but direction different रहता है. So that means assertion completely correct but reason is not valid, right? Because reason is based on the momentum only. Now let's move to the 30th question, which is a man's near point is 0.5 meter, far point is 3 meters. Chapter कौन सा है, ऑप्टिक्स में से आया. ठीक है. Power of spectral lens required for reading purpose. Now suppose you have some shop, आपके पास आई शॉप है, and a man come and उसका near point 0.5 है, far point 3 meters है. Now what should you recommend, what should be the power of the lens that she use for a reading purposes and for seeing the distance objects also.
So in that case, for reading purpose, we can apply the formula. U is given as minus 25, which is our nearest vision, which we are able to read. V is equals to minus 50, which is given, right? This is, you can see. So we have a formula, 1 by F is equals to 1 by V minus 1 by U, which is the lens formula. We can put the values and we get this. Now power means this is 100 by F. We can find plus 2 diopter as a perfect answer. And for the distant vision, which is distance of the far point is minus 3, which is given. This is far point 3. So power is equal to 1 by F dash, which we have given. So minus 1 by 3 diopter means 0.33 diopter. So 2 and minus 0.3 diopter is the specs lenses that that particular man needs. And accordingly, this option number 3 is the correct answer. Now, let's move to the question number 31st, which says the refracting angle of a prism is A. Refractive index of the material of the prism is cot A by 2. The angle minimum deviation is. This question is from prism chapter. So we know the refractive index of the material is nu is equals to, this is the formula, and again you need to find this formula from your sheet, from the formula sheet, like I'm telling you since from the first question. So this is the formula for the prism. That's why the formulas are so important. If you have formula, you have practice, you are superstar. Okay. So nu is equals to this. Now we need to find this cot A by 2. We can simplify it. It's some mathematical trigonometric equations. We are simply using it and resolving it, putting the values as the given, which is given, and we find it 180 minus 2A, which is a simple value. This is the answer. Okay. Now let's move to the next question, 32th question. Resolving power of a telescope increases with what? So resolving power of telescope. First, what is it given as? It is given as this by limit of resolution. That means d by 1 by 1.22 lambda. So if we are increasing the resolving power of aperture, resolving power is also increased. So accordingly, you can see for this increase in aperture of an object, this will be a correct answer, because if we are increasing this aperture, this resolving power is also increases. So if we need some telescope, we need to increase the resolving power. We need something in which the aperture of objective should be increased. So option number 4th is your correct answer. Let's move to question number 33. Question number 33 says, okay, when light is refracted into a medium. So refracted means it is not reflected, it's refractive, means one medium to other medium it is moving. So what happens? This is from ray optics. So what happens here? It's wavelength, frequency, like these so many confusing options. Don't read these options. Instead, first think what happens when a light is going from one medium to other medium. Suppose you can see it is moving from denser to rarer medium. This is medium I, and R is the incidence angle and refractive angle. This is medium 1, medium 2 having so this is I, this is 90 minus R. It will become Snell's law states sin I by sin R is equals to V1 by V2. That means nu2 by nu1. So accordingly, that means if R is greater than I, that means V2 is greater than V1. Snell's law states this. So V2 is equals to n lambda 2, which is greater than V1 is equals to V1. So that means n lambda 1 is equals, basically lambda 2 is greater than lambda 1 in this particular scenario. So that means frequency of the wave does not change in refraction. Whatever refraction, any medium refraction is going, frequency does not change, only the wavelength change. And wavelength change like this. So that means option number 2nd is the correct answer. Wavelength increases, but frequency remains unchanged. Okay. Okay, next is, which of the following cannot be explained on the basis of wave nature of light? So this is again from the chapter photoelectric effect, means dual nature. So what it is says, among these following इनमें से कौन सा जो है explained on the basis of wave nature of the light, polarization, total internal reflection, photoelectric effect, Compton effect, इसमें से कौन सा नहीं होगा? See, अब इनमें से कौन सा जो है wave nature explain नहीं कर सकता है ना? पोलराइजेशन को एक्सप्लेन कर सकता है, वो कर सकता है. टोटल जो हमारा फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट है और कॉम्पटन इफेक्ट है, ये जो है पार्टिकल नेचर से एक्सप्लेन होता है. तो इस दैट मीन्स ऑप्शन नंबर 2 is your correct answer. Next, 35th question. What does it says? It says when the angle of incidence is 60 degree on the surface of the glass slab, it found that reflective rays completely polarized. The velocity of light in the glass is this. So
This question is from polarization. We can directly apply the formula, which is this tangent theta, this is our polarizing angle, and this is tangent 60 degree. Simply put the values, get the value of this Vg. By solving it out, we get it under root 3 into 10 to power 8 meter per second. That means option number 2 is the correct answer. So we have completed our section 1. Let's move to our section number B. Hold on, have some 10-second break into your mind only, not within this video. Just take 10-second of break, and then let's move to the question section number B. Okay. A point charge is kept at the center of a metallic insulated spherical shell. Then that means we have a metallic insulated. That means it is not affecting any environmental temperature changes or any changes. So in that we have kept a point charge inside it. Okay, so a point charge is kept at the center of this. Then what happens? Electric in that case, electric field out of the sphere is 0, electric field inside the sphere is 0, net induced. So in this case you can see it is in center. That means the net induced charge on the sphere is 0 because it is also insulated. So this is the complete result of direct consequences of Gauss law. Now move to the question number 37. 8 drops of mercury of equal radii possessing a equal charge combine to form a big drop. So 8 drops of mercury, same radius, that are equally combining and form a body C drop. Then the capacitance of the bigger drop compared to each other, capacitance कितना होगा उसका comparison करना है छोटी छोटी balls के साथ, ठीक है? In that what we can use logic, 8 छोटी छोटी ड्रॉप्स मर्ज हो रही है तो वॉल्यूम जो होगा उसका तो सेम रहेगा ना, बिकॉज वॉल्यूम तो इफेक्ट नहीं हो रहा है. ऐसा तो नहीं है कि एक बॉल और 2 बॉल को 1 किलो की बॉल और एक मतलब सपोज उसमें 1 लीटर पानी है, इसमें 1 लीटर पानी है, वो कंबाइन हो गई 2 लीटर पानी बनेगा. ऐसा तो नहीं है कि 3 लीटर पानी बन जाएगा दोनों को कंबाइन करके, है ना, क्योंकि वॉल्यूम्स को हम मिक्स करते हैं तो वॉल्यूम तो कॉन्स्टेंट रहेगा. 1 लीटर बॉल प्लस 1 लीटर बॉल मिलके 2 लीटर ही बॉल बनाएगी. सिमिलरली 8 मर्करी ड्रॉप्स मिलेंगी, दैट दे विल हैव अगर मिलेंगे वॉल्यूम शुड बी सेम एज बिफोर, है ना. तो दैट मीन्स जो वॉल्यूम हमारा रहेगा वो कितना रह जाएगा, इसमें हमने डबल इसका क्या कर दिया, इट शुड बी 2 टाइम्स लाइक डबल, ठीक है, सेम वो रहेगा. कैसे, ये देखो वॉल्यूम ऑफ 8 ड्रॉप्स, वॉल्यूम ऑफ बड़ा ड्रॉप, इसका 8 इंटू दिस, इसका 4/3 पाई आर स्क्वायर का फॉर्मूला सॉल्व करेंगे. आर की वैल्यू है कि 2r मीन्स डबल, ठीक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 38. वेट अ सेकेंड. The internal resistance of 2.1 volt cell which gives a current of 0.2 ampere through a resistance, this is internal resistance दे दिया आपको, and the current is through a resistance is what? Question is from electric currents considering the internal resistance. EMF is given, I is given, internal resistance we need to find out. Directly put the formula which is E is equal. This is the directly formula. Substitute the values and get the required answer. Nothing specific doing here. Next question, 39th. Next question says, when a potential difference V is applied across a conductor at the temperature T, the drift velocity of the electron is proportional to what? So in that case, you can see the electric, we know that the formula for the drift current is I is equals to NEAVD, right? So in that case, you can see I already told you in earlier, whoever in it is an, अगर आपकी कोई चीज़ बिल्कुल सामने न्यूमरेटर में है, they are friends, है ना. So that means VD is directly proportional to I, and from Ohm's law, I is directly proportional to V. So that means VD जो होगा हमारा वो V के directly proportional होगा. That means it is simple V. Option number 2 is the correct answer. Now next, 40th. If an electron and a proton having same momenta enter perpendicular to the magnetic field, then एक electron और एक proton same momenta के साथ magnetic field के अंदर आ गए, देन क्या होगा उनका, ठीक है. क्या होगा, क्या अभी यहाँ पर है. अब द एक्सप्रेशन ऑफ द रेडियस वी आर गिवन दिस, so r is same in the both cases, so the curve path is also same, so that means the curve path of electrons and proton will be same. Simple. Next question, 41st. A bar magnet is cut into 2 equal halves by a plane parallel to the magnetic axis. One of the following physical quantities, the one which remains unchanged, which will remains unchanged.
So in that particular case, this is intensity of magnetization do not change upon cutting. If we are cutting the magnet, it doesn't mean it will become less magnetized. उसका magnetic effect कम हो जाएगा उसके अंदर, magnet वो अब अच्छा magnet नहीं रहेगा, कम हो जाएगी magnetism, ऐसा तो नहीं है ना. तो इस केस में क्या रहेगा, intensity of magnetism it will always remain same. Now move to the question number 42. A wire of length 50 centimeter moves with a velocity this perpendicular to the magnetic field. आपको निकालना है EMF भी given है, मैग्नीट्यूड निकालना है ऑफ द फील्ड इन द टेस्ला में निकालना है. ठीक है, चलो निकालते हैं. फॉर्मूला अगेन, फॉर्मूला सिंपल. E क्या होता है, BLV के बराबर. पुटिंग द वैल्यूज वी गेट द सिंपल B 0.8 टेस्ला विच इज द रिक्वायर्ड आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन. द रेशियो ऑफ मीन वैल्यू ऑफ ओवर हाफ साइकिल टू RMS वैल्यू इज व्हाट. देखो वी नो, हमें क्या पता है इसके अंदर कि IRMS इज इक्वल टू दिस. इसमें हमारे पास ये निकल जाएगा. जस्ट गिव मी सेकेंड. ओके, सो अगर हम रेशियो निकालते हैं IM by RMS का, वी गेट 2√2 पाई. इट्स सिंपल. सो फ्रॉम हेयर वी हैव द वैल्यू 2√2 पाई. यहाँ से हमारा ये निकल आया. तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हुआ, सेकेंड वन, 2√2 पाई, ये वाला. Next question, 44th question. Okay, so 44th question is magnitude of the de Broglie wavelength lambda of electron E, proton P, neutron N, alpha particle alpha, all having the same energy of 1 MeV in the increasing order we follow sequence. So in that case, what happens, lambda is equals to h by under root 2 me, so h is indirectly proportional to 1 by under root m. Since m alpha is greater than m n m p m n, so de Broglie wavelength is increasing order, so that means your option number this third is the correct answer. Next question. The energy of a hydrogen atom in the ground state is this. The energy of helium plus ion the first excited state. So this question is from atoms, Bohr models में से, right? So we know the formula. क्या formula है, En is equals to minus z square and 13.6 n square by ev. अब first excited state में गया वो He के, तो that means n बन गया 2, z बन गया 2. Put the values and get the required answer as minus 13.6 ev. Now next question 46. The following अब हमें गेट दे दिया. अगेन वन क्वेश्चन इज फ्रॉम गेट. सो ये दे दिया और आपको इसका बताना है कि इक्विवेलेंट क्या निकलेगा. ठीक है, इक्विवेलेंट का क्या निकलेगा इसके अंदर. अगर हमारे पास ये गेट्स थे ना A और B, यहाँ पर हमारा ये गेट्स बना. y1 क्या होगा, A प्लस बी. y2 क्या हो जाएगा, उसका अपोजिट यहाँ से आएगा. सो y बन गया हमारा A प्लस बी डॉट ए बी का अपोजिट. इनको हमने रिजॉल्विफाई कर दिया एंड वी गेट दिस A डॉट बी का रिवर्स प्लस B डॉट ए का रिवर्स, मीन जॉर गेट आ गया. तो आंसर इज जॉर गेट. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 47th क्वेश्चन. According to Bohr theory of hydrogen atom, the speed of electron, its energy and the radius of orbits varies with the principal quantum number n respectively as these numbers. So here we know velocity is inversely proportional to n. So energy is inversely proportional to in by square. That means radius of orbits direction n square. So it's very simple. You get the final answer as this. Now next question 48 is a plano-convex lens is made of material. Refractive index is given. The radius of curvature of the curved surface is 60 centimeter given. We need to find the focal length. Focal length R is given, R2 is infinity and nu is also given. Simply applied into the formula which is given, and if we are applying it we find the directly focal length. It's a very simple one. Let's move to our question number 49. Which of the given statement does correct for phenomenon of diffraction? For diffraction through a single slit, the wavelength of a wave must be comparable to the slit. The diffraction is very common in the sound waves, but not so common light waves. We have the three options given. So in the diffraction pattern, the size of the slit should be comparable to the wavelength of the waves used. It should be always. It is a concept based, theory based question. और क्या होता है डायफ्रेक्शन के अंदर डेली रूटीन में अगर हम देखते हैं साउंड वेव्स हैं which is longitudinal waves, because wavelength of a sound waves is large, wavelength of a light waves is small. So हमें जो diffraction जो है लाइट में नज़र नहीं आता डेली रूटीन्स के अंदर. थर्ड, डायफ्रेक्शन जो होता है वेव का इज ओनली ऑब्जर्व इन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स. ये वेव फेनोमेनन है, तो हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में भी और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स में भी देख सकते हैं.
दैट मीन्स आपका सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 चाहिए, क्योंकि ये आपकी क्वेश्चन जो है गलत है. ये हम लॉन्गिट्यूडनल में भी देख सकते हैं. नाउ कम्स टू द लास्ट क्वेश्चन, एंड लास्ट क्वेश्चन है थोड़ा सा तो बड़ा होगा, है ना. तो अ रॉड ऑफ अ लेंथ 10 सेंटीमीटर लाइज अलॉन्ग द प्रिंसिपल एक्सिस कनकेव मिरर. यहाँ पे आपको फॉर्मूला एक फिगर के थ्रू समझाते हैं. यहाँ पे आपको एफ दे दिया 10 सेंटीमीटर, ये दे दिया 20 सेंटीमीटर. फोकल लेंथ मिरर की क्या होगी, ये फॉर्मूला था. अब ए एंड ऑफ द रॉड इमेज डिस्टेंस ν1 माइनस होगा, पुट करेंगे, यहाँ से हमारा v1 की वैल्यू निकल जाएगी. ठीक है. अब ν2 का केस -30 है. ठीक है. इस केस के अंदर ν2 -30 है. अगेन पुट करेंगे, यहाँ से हमारा v2 की वैल्यू भी निकल आएगी. हमें तो लेंथ निकाली थी इमेज की. सो द लेंथ ऑफ द इमेज इज v2 - v1 मीन्स -50 -20. इट विल कम्स आउट टू बी 5. Now comes to the chemistry. Don't worry, I'll not give you an explanation of chemistry. In this session only, we will talk about physics. And hence we have covered the Brahmastra part, Brahmastra test part, Brahmastra test 4. और हमने ये पूरा का पूरा टेस्ट को अच्छे से सॉल्व कर लिया. ठीक है, समझ लिया. Still, if you have any questions, any doubts or any topic related queries, you can directly comment me out there, and we will here to help you out anytime. Okay, so let's meet in the next session. In the next session, next video, we will discuss about the next test of the Brahmastra series. Till then, good luck guys. Bye bye.